Hello guys, very good afternoon, and this is Piyush Khandelwal. I welcome you all to your loving channel, which is Geeks for Geeks Practice and Geeks for Geeks Main. Can you guys please type yes if I am clearly audible to you? Right, just need to type yes if I'm audible, because in this session we are going to discuss about one of the most critical and important topic, which is graph, right? How you can actually ease your learning in graphs, right? Because graph is a very complex data structure, as we all know, and the problems that, and it is very important also from the perspective of like cracking the company's interviews or the coding round of the interviews, right? Yeah, thank you, Gaurav. Thank you very much. And we will be discussing about graphs theory, like how you can actually, what are the best resources which you can actually consult to get the expertise on graph theory. And I can tell you one thing, right? When I used to learn this thing, when I used to learn data structures, right? So my learning path used to slow down when these types of complex topics start to like we start encountering these topics, like graphs were there, dp was there. So we have kept this thing in our mind, and we have figured out certain ways so that you may not feel those difficulties while you are preparing data structures, right? And today we have Pawan also with us, and we will be sharing our experiences. We'll be sharing certain ideas so that we can help you to lead an easy path. Okay, Pudi is Shrikar is there. Pudi, the connecting edges has not stopped, right? It has. It was a complete session. We have figured out, like we have give the complete insights about it, and that's why we are here today. So that if you need more details, we can discuss with Pawan what else can be added to them, and we will be discussing with you also, right? What else you need from your side, so that we will be adding those things to connecting edges series as well, right? So let me introduce Pawan, and then we will be sharing our experiences. I will be asking questions to Pawan. How was his experience when he will be teaching graphs? Right, he was teaching graphs, right? So we will be let me call him first. Hey Pawan, how's you? Yeah. Hello, Piyush. I'm fine. How are you? Absolutely fine, dear. Absolutely fine. And you know that why we are here, right? Because we have seen graph is very important data structure from different perspectives, right? So, Pawan, I want you to present your expertise, right, to help our students so that they can actually figure out what is the easiest way to learn graphs, and how we can get our expertise done, right? How we can make sure that whenever we encounter the problems on graph, on any coding contest or any interviews, right? They will be able to figure out the problem, that this is the problem of the graph, and they will be able to solve that then and there only, right? So Yes. guys, पवन से हम थोड़ी सी बात करेंगे इसी चीज के रिगार्डिंग। पवन, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हमने कनेक्टिंग एजेस शुरू किया था प्रैक्टिस पर, ठीक है? So why did we started? Why did we had a session on graphs? Like what was in your mind, right? कि हमें graphs के ऊपर एक session plan करना चाहिए। Okay. So, since from the beginning, I was saying, like in each lecture, that graph is a thing which everyone should learn. Like the person who are not like in the computer, or like general people, they can also feel interested about graphs, because it is giving us a many real life scenarios apart from the interviews and competitive programming perspective. So first of all, let me talk about its importance in the competitive programming. So when we start our journey in the competitive programming field, first of all, we encounter the problems related to implementation, mathematics, simple logic building, these kinds of things. And when we move ahead in the journey, then we'll encounter the greedy technique and the other part. And after that, when we understand these things, then we encountered these advanced data structures and the graph algorithm. So, like starting the journey, the interest and the
and the feel for knowing new things is important to start the journey of competitive programming, but to continue it to a good level, then the knowledge of these graphs and other topics are required. So I think for continuing and for getting much better in competitive programming, graph is like a bridge. uh, this will be a fun type of thing. Who know about the graph, like there are the concept of bridges in graph. So from Okay. that perspective, I'm saying that graph topic will act as a bridge to your journey. Like it will boost your confidence as So, well as. so when I say bridge, right? So you have a connecting edge which can disconnect it into two components. Am I right? Yeah, yeah, correct. So you say that if you have not done graphs, right, you are still at a disconnected part of competitive programming. You have left Correct. something, right? You will not be able to reach there. Yes. Because it is like we can Nice. say that it is the one and only path which will lead you to the higher rating or higher understanding of competitive programming. So graph is like we cannot compare it with the other topics. Other topics are also good, but graph is something which is necessary, right? Without the knowledge of graph, there are like I can say I have done many, I have given many competitions in related to competitive programming. So from my own personal experience, like if there are 3 or 4 questions, one question is always based on graph, and sometimes more than one questions also. So from this, you can like understand what is the importance of graph, right? It is most frequently asked question in each and every contest. Okay. So Pawan, like importance मेरे को समझ में आता है. I got the idea that graph is an important topic, right? But when things are important, right? So we need to have the expertise, right? We need to spend more hours on it, right? We need to have more and more practice on it. So if I want to do certain amount of practice on these topics, right? So what do you think? Like, what is the minimal amount of time a programmer, a beginner should be able to spend so that he can say, yes, I have attain a certain level of confidence, and I would be able to solve the problems of graph. What is the amount of time or dedication is required from a beginner level? Okay, so so this is a good question, I will say, but the time which will differ obviously for each person. It will not be the same time for all the persons, because कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, और इंटरेस्ट का भी रहता है कि Agree. किसी को ज्यादा इंटरेस्ट आता है ग्राफ पढ़ने में, किसी को कम आता है. So it might differ, but I think practice is definitely important. And when you started learning, it is the best phase to expertise in that field, right? Because in the beginning there is excitement, there is feel for learning more. Excitement रहती है कि कुछ नई चीज सीख रहे हैं तो उसको अच्छे से सीखें. So in the beginning phase, I think it is the best time to practice it more and more, right? So I think solving regularly 2 3 questions daily on graph will help a lot, because when we learn a topic, when we learn a concept, then we will learn it better if we try the problems on that. So So I you are think saying you are saying 2 3 questions per day, right? I yeah, but like if you ask me, I will take 2 3 days to solve one problem, right? But when you are suggesting that 2 3 days, 2 3 problems per day, is there any way to start? Like, is there any good resource to start with so that I can have level one problems, level two problems? Is there any resource available? yes, there are many resources available online. You can search in the Geeks for Geeks channel also. Like in the Geeks for Geeks website, you can get like all the problems related to graph, topic wise sorted. So there are two different ways to practice any problem, in my opinion. One is to sort them according to the topic. So you pick one topic and solve the problem starting from easy to difficult in that particular topic. The other another way is to uh, start solving according to the difficulty. So you can pick easy topic and solve easy topic of all the easy problems from all the topics, and then move to medium and then move to hard. So these two kinds of strategies you can try to solve, and both will work fine. It is just
how you like to solve approach the thing. So both of these things will be good, and I think we have like on our website uh, sorted problem according to the difficulties as well as topic wise. So if you want problem, you can. So let Uh, me tell my audience that if you want to learn graphs, right, we started a series which was like connecting edges, in which we used to tell you, right, we used to our intention was to give you an idea that how you can start with graphs and you can reach the level from 0 to 1, right? So this was our whole intention. And if you have not seen it, you can go to Geeks for Geeks practice channel and you can check out the playlist of connecting edges, where you will see Pawan himself is teaching you graphs, right? And Pawan, have you taken care of this fact, right? That as you told that we have to classify problems from level 0 to level 1 to level 3, right? Easy, medium, hard, right? Have you taken care of that thing in your sessions? Yeah, sure. So in my session, like first of all, I'll tell you like why we take the session in the first place, because as we have the like problems, but 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 we understand the problem in the video format. Like जब जब हम लोग को कोई समझाता है वीडियो के फॉर्म में, then I think we understand the things better. So I think that's why we started this our series named Connecting Edges. And in that I have taken care like first I try to explain the topic which is like which is the topic for that day. So the flow is like I explain the topic, about the topic, the importance of topic, and the code. Like suppose I am teaching depth first search. So first of all, I'll just explain what is depth first search. And when we see the things visually like happening in front of our eyes, then I think the understanding is better. So I have tried to like give the visual representation of the DFS, and then we first discuss about the implementation. Like we can see the code first, but to understand that better, we should learn like the step by step, each step we should see each step how the thing is happening. So I try to take care of that part. So after that we move to the coding part. So once we see the step by step process, then I have explained the code for that topic. And after that I try to take the conventional problems on that, which are most like which are the standard problem, like you should know about that those problems. So those problems I have Okay. after the session, like after explaining the theory and the code, I have taken those problems. So for each topic, like the flow is like that. So, guys, let me tell you. Meanwhile, you can ask your problems, right? If you have certain ideas, if you have gone through the sessions of connecting edges, right? If you have any doubt, right? Yeah, Spartacus. let me tell you. We are talking about. You can go to Geeks for Geeks practice channel, and there you can figure out we have connecting edges, right? A series with the name connecting edges, where we have dealt from like we will see the session 1 to session. Like how many sessions do we have, Pawan, over there? So currently we are having the 9 sessions. Like the session is of I think 1 hour. So there are currently 9 sessions, and in them I try to take like all the problems in the perspective of competitive programming and interviews. So keeping in mind these, I have prepared these topics and the problems and all the things related to that. So yeah, there are Okay. 9 lectures currently. That's fine. That's fine. Hmm. Yeah. So any other question are there? Yeah. So Okay. Okay. let me give more insights about the lectures. So yeah, like I have keep in mind before starting the session that these sessions should not be like very difficult. Like I shouldn't start from the difficult topics, keeping in mind that they should be helpful for the beginners also. So like जो बिल्कुल नया है, जिनको मतलब जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनकी नीड को भी दिमाग में रखते हुए मैंने मतलब उसको डिजाइन किया था. तो स्टार्ट हमने बिल्कुल बिगिनिंग से किया था. वी जस्ट स्टार्टेड विद द टर्मिनोलॉजीज
what are the terminologies we generally use in graph, and how we connect the like what are nodes, what are edges. These are the terminologies, and how can we connect the nodes using the edges, right? And how can we represent the graph in the form of like there are two major forms in which we can represent the graph. One is the adjacency matrix and list. So these kind of things we have taken in the beginning session. So the one who didn't know anything, like who are just starting, these will be very useful for them, so they can learn the basic thing. And after that, we have moved to the advanced topic, the traversal, the different types of traversal, right? Then cycles. The next lecture is on detecting the cycles in the directed and undirected graph both, and we have taken the problems on that. What kind of problems may be asked for like on the cycles, and after that we move to further advanced topics like the bridges and the articulation points. So from the topic bridges and articulation points, these are the actual advanced topics which which will really help in the understanding, right? So after that Okay. the series become very interesting, I think. Okay. uh, Pawan, I think there is some issue with the video, right? Let me connect again, and okay, okay. Yes, we'll yes, continue this discussion, right? You stay sure, sure, there. no worries. Okay, so let me see some of the questions from the chat. Yes, Piyush, the video was stuck. Okay, now there are general discussions also. Yeah, Anil, you have a very important question. Yes, Milind, problems like we have taken the theoretical and like explaining part and some problems. Yeah, one or two problems for each topic, I think. So if you want more problem solving, we can, yeah, we can do that also, right? So this session is regarding that. If you have any suggestions, any more topics you want, we can add them. Yeah, yes, particles. We will share the link for the playlist. It is just present on the GMC practice channel, but we'll share the link also. Any other question? Yes, Kudi was asking before that why were the connecting edges session stopped. So yeah, as Piyush sir explained, it is not stopped, right? We are just taking the insights. What more you want from that, right? So any other question regarding the session or anything else you can ask? Okay, you are saying Particles is saying please make some videos on recursion of binary trees. Okay, right. We can do that. So now I think it's fine, right? You're still freezing. I think there is some issue. Okay. So I think there is some problem with the network only. Yeah, and yeah, now like it is better than before, but there is a slight lag, It's I still think. okay. No issues, no issues. So meanwhile, it's your is clear, and we want your insights, right? Main in this session. Okay. So that's fine. So what do I want is, as you told that you give us the brief description, right? What we have covered in the different sessions, right? So guys, if you have not figured out, if you have not checked out this playlist,
do check it out, because I can tell you Pawan has put a lot of efforts, and we have tried our best to give you one place solution, one stop solution, so that you can start your journey with the graphs, right? तो जो जो डर जो जो फियर आपके अंदर रहता है ना ग्राफ्स को सुनकर, क्या मैं ग्राफ्स की प्रॉब्लम छोड़ देनी चाहिए, आई शुड नॉट बी पिकिंग इट अप, पहले मैं एरेज की या सर्चिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ या लिंक लिस्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ, तो वो डर आपके अंदर से एकदम खत्म हो जाएगा। आप पवन के सेशन, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आई हैव अटेंडेड दोस सेशंस, आई हैव सीन द कंटेंट, एंड आई कैन टेल यू, राइट, इफ यू वांट टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एट ग्राफ्स, यू एक बार आप उस सीरीज को जरा गो थ्रू करके देखिए, ठीक है। एंड डेस्टिनेशन मैं आपको बताता हूँ, गीक्स फॉर गीक्स प्रैक्टिस चैनल पर यू कैन चेक आउट, देयर इज अ प्लेलिस्ट विद connecting edges name, right? We started the series with the name connecting edges, right? Connecting edges क्यों रखा, मैं वो भी बताता हूँ आपको कि हमने एक नाम जो सोच करके रखा था, रीजन बीइंग जैसे अभी पवन ने बताया था आपको, राइट, कि इट इज अ ब्रिज, राइट? तो आपकी अगर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जर्नी है, तो अगर आपने ग्राफ्स को छोड़ दिया तो राइट, तो आप एक पार्ट पर रह जाओगे, दूसरे पार्ट पर पहुंच, मतलब बिगिनर टू एडवांस जो वाला लेवल है ना, वो उस पर नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको बिगिनर से एडवांस में पहुंचना है ना, तो ग्राफ इज अ ब्रिज, राइट? तो दैट्स व्हाई देयर इज अ कनेक्टिंग एज दैट वी एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, वी एक्चुअली ट्राई टू फिगर आउट, ठीक है? तो वो कोशिश हमने की है कि आपको एक बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल पर हम लेकर जाएं विद द हेल्प ऑफ आवर सेशंस, राइट? तो गीक्स फॉर गीक्स प्रैक्टिस चैनल पर कनेक्टिंग एजेस नाम से सीरीज हमारी है, जिसको पवन ने पूरा पढ़ाया है, ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करा है, बेसिक एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करना सिखाया। उसके बाद जो प्रॉब्लम्स जो आपकी हो सकती हैं एल्गोरिथम से रिलेटेड, जितनी प्रॉब्लम्स, वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, उनको भी डिस्कस करने की पूरी पूरी कोशिश किया है, राइट? आई होप यू ऑल विल लव इट इफ यू आर लुकिंग फॉर योर करियर इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, राइट? आप अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो और अभी आपने कंपनीज के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, राइट, या स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक, तो आपको वो सेशन जरूर जरूर अटेंड करने हैं, एंड दे विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है? बाकी मैं पवन से जो बात कर रहा था कि अभी पवन ने जैसे बताया कि ओके, the playlist is not available, you will get it, right, but you should subscribe the geeks for geeks practice channel for that, ठीक है? तो आपको लिस्ट आपको मिल जाएगा, अगर विजिबल नहीं होगा, अभी प्राइवेट है शायद मेरे ख्याल से, तो वी विल बी, थोड़ा सा वर्क उसमें चल रहा है, यू विल गेट इट, राइट? आप बस गीक्स फॉर गीक्स प्रैक्टिस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यू विल गेट द अपडेट आफ्टर दिस सेशन ओनली, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? बट वीडियोज आर देयर, इफ यू वांट आई कैन गिव यू द लिंक ऑफ द वीडियोज, वो मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ, ठीक है? और ये भी मैं आपको बता देता हूं, चलिए पवन से और जान लेते हैं अभी ना उस सेशंस के बारे में, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया, राइट? तो अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है ग्राफ से रिलेटेड, तो हम देखते हैं कि वो हम पवन ने कवर किया है या नहीं किया उसमें। तो कोई टॉपिक, एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस आपको लगता है कि वो टफ है, राइट, तो वो हम जो है यहां पर डिस्कस कर लेते। तो आप मेरे को ये बता दीजिए आपकी तरफ से, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस, राइट, ऑल ऑफ यू, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ एनी टॉपिक विच यू थिंक इज वेरी डिफिकल्ट इन ग्राफ, इन कॉन्टेक्स्ट टू ग्राफ, राइट? आप टॉपिक्स बताइए। Yes, yes, I will be sharing the link here only. Don't worry about it. Let me do it once. Just chat, you can ask like the topic which you find difficult. Okay, recursion, backtracking, right? Backtracking को मैं ग्राफ से, मतलब ये चलिए ठीक है। तो what you will say about recursion and backtracking, how they are used in graphs, right? क्योंकि important तो है, DFS सबको करना है, ठीक है? तो आपको अगर recursion backtracking समझ में आता होगा तभी आप DFS लगा पाओगे मेरे हिसाब से। What do you say, Pawan? हाँ, सही बात है। मतलब recursion, obviously DFS we implement generally using the recursion, and in my sessions I have implemented the DFS using recursion, and the backtracking also, like it is just depends on the question. Like if the question demands the backtracking, then we'll implement that with some modification in the code of DFS, which is just the problem solving part. Like I think also DP on graph was also written in the comments. So DP on graph is like we can have one problem solving session
and we can take DP on graph, because these are more of the like problem solving oriented kind of thing, right? Because DP on graph is just based on the problem. We can have some query on trees and like that. In that we need to use the DP. So these are the problem solving things which we can plan in the future, right? And DP on graph, like we can say that I have implemented, like I have explained how to find the LCA using the binary lifting technique. So it is also very interesting. Yeah, you can check that out also. So that technique we can use, uh, like on the concept, like in problem solving or DP on graph, we can use that binary listing is more frequently used. So we can see that if you want. यस अब मैंने ना लिंक आपको शेयर कर दिया है चैट में, ठीक है, आप यहां से देख सकते हो. तो दिस इज द लिंक टू द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस कनेक्टिंग एजेस, राइट. आफ्टर दैट यू कैन लाइक, आप उसको फॉलो करके देखिए आपको कैसा लगता है. उसके बाद आपको और भी सेशंस, 9 सेशंस आर देयर, ठीक है, वो आपको पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा एक एक करके. एंड प्लेलिस्ट आल्सो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट देन देयर ओनली आफ्टर दिस सेशन, right? DP on graph is the Kruskal algorithm, so Kruskal Prim's algorithm to find the MSP, right? MSP, Yeah. MST, right? Minimum spanning tree. Minimum spanning trees. Yeah. Yes. He's saying that link open. Yes, Milian, you were saying that there were a few problems. So if you want, we can have, like as I said, we can have the problem solving session focusing focusing just on the problem solving part. We can plan them also in the future. So if you want that, we can organize that, this thing. Milian, generally what happens, right? The idea about creating, because you know Pawan is involved in a lot of things, right? Like this session was being conducted, एक special request हमने पवन से किया था कि because we want this session for our audience, तो हम बहुत short time का एक duration 9 sessions हम बना पाए थे उसके, ठीक है. लेकिन हमने एक आइडिया देने की कोशिश की थी, ग्राफ्स को हम आसान बना सकते हैं. ग्राफ्स उतना डिफिकल्ट है नहीं, मतलब जितना हम, क्योंकि जब हमने रिसोर्सेज फिगर आउट करने की कोशिश किया, वी ट्राई टू फिगर आउट रिसोर्सेज एट प्लेसेस, तो कुछ टॉपिक्स थे जिन पर हमें कंटेंट नहीं मिल रहा था, राइट, एंड विच आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें ग्राफ्स था, डीपी था, आपका गेम थ्योरी था. उन सब के ऊपर हमने सीरीज प्लान इसीलिए किया. बट माइट बी पॉसिबल कि वो पूरा इन डेप्थ ना हो, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वो हमने क्यों, किस पर्पज से हम बनाते हैं कि आपकी क्यूरियोसिटी को ना, आपका एक्साइटमेंट को वो लेकर के जाए. आपको ऐसा ना लगे कि हमें ग्राफ समझ में ही नहीं आता है या हमें डीपी समझ में ही नहीं आता है, राइट. आपको लगे कि हाँ हम कर सकते हैं वो प्रॉब्लम्स, एक इंटरेस्ट आपका डेवलप करे. आपको आपके अंदर अगर आपने इंटरेस्ट डेवलप कर दिया ना, आपको लग गया कि हाँ मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, तो मैंने आपको 4 प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया, आप 40 प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे खुद से. That is our motive, right? Each and every problem cannot be solved here, but still, if you think there are certain problems that should be solved, that will help others also, definitely, Milian, we will be considering your request, and we will be having sessions and sharing the solutions or the concepts of or the ideas of those problems. Don't worry about it. It's an open session. So ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया है. We will continue it, right? Don't worry about it. Yes, and I can understand. I like to point out that Milian Gupta is one of the very active participant in that series also. He continuously asked that out. He attended the session, so I can understand his concern. Generally, this happens right when you are participating in something ना, ठीक है, तो वो फिर डिसअपॉइंटमेंट होता है, वो सेशन जब रुक जाते हैं ना, तो फिर एक डिसअपॉइंटमेंट लगता है, ठीक है, लगता है कि कंटिन्यू रहना चाहिए सीरीज. बट मैं बता रहा हूँ, जैसे टेक्निकली इट इज नॉट फीजिबल, राइट, टेक्निकली इट इज नॉट फीजिबल बिकॉज वी हैव डिफरेंट थिंग्स टू कम, डिफरेंट थिंग्स टू डू ओवर हियर, राइट. तो एक इनिशिएटिव था जो हमने किया था, और अगर आप लोगों को पसंद आया है, आपके फीडबैक्स अगर अच्छे रहते हैं, तो we'll definitely work on it, and we'll definitely work on your suggestions. Yeah. ठीक है. अमित, आप अगर लिंक नहीं ओपन कर पा रहे हो, गीक्स विद प्रैक्टिस चैनल पर आप जा सकते हो, और वहां पर आप कनेक्टिंग एजेस के जो जितने भी वीडियोस हैं उन्हें सर्च कर सकते हो, राइट. They are available on the channel. और बाकी व्हाट डू यू थिंक,
क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए आगे, जैसे ना जैसे सेशंस आपके अटेंड किए लोगों ने, ठीक है पवन, तो आर देयर एनी रिसोर्सेज ऑल्सो जिनको वो कंसल्ट कर सकें, देख सकें कि और अगर उन्हें एडवांस करना है और सीखना है तो कैन यू टेल अस सर्टेन रिसोर्सेज, कुछ बुक, अच्छी बुक्स जिनको वो फॉलो कर सकते हैं? Yeah, there are books related to competitive programming. So I can suggest like there is a CP handbook. You can try that, and the famous one, the CLRS, all of us know, the Bible of Yes, competitive programming. Yeah. दैट It is दैट the like वो सबसे वो तो इम्पोर्टेंट है, मतलब ना। हाँ, वो अगर पढ़ ली तो फिर मतलब कोई है रिसोर्स है नहीं, मतलब दूसरा उससे बेटर तुम्हें पढ़ने के लिए। राइट राइट राइट। और उसका बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप वो पढ़ते हो तो आप अपने कोर्स को भी कंप्लीट कर रहे हो, राइट? तो आप आपके चांसेस अपने अपने सब्जेक्ट्स, मतलब मैं स्कोरिंग को और मार्क्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, बट स्टिल, राइट, तो अगर आप अपने जैसे आपका कोर्स का पार्ट है और उस टाइम पर ही आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो तो आपको ना अलग अलग से एफर्ट पुट नहीं करना है, आप ऑटोमेटिकली अपने एग्जाम्स में भी अच्छा स्कोर करते हो, ठीक है? Exactly, exactly. And everything there is given with a proof. You do not need to find the proof for anything. You will get it there only. This is यस the best एग्जैक्टली, part. आई एग्री इंसर्शन सॉर्ट का भी उन्होंने जो एक प्रूफ पहले दिया हुआ है, ठीक है, मतलब आई रियली लाइक दैट बुक क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। बट व्हाट थिंग इज उसका जो साइज देख करके ना, मतलब डर लगने लगता है कि हाउ लाइक शुड वी स्टार्ट, राइट, द नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, ठीक है, वो थोड़ा Yeah, सा exactly. Okay, so David Raj is saying real-time implementation of graphs. Yes, we have actually done this thing in our sessions, right? But still, Mhm. if you figured out, you can look for real case studies, right? Harshad, we are talking about Coloris, right? Yeah, yeah. Like the name of the book is Introduction to Algorithm, and there are four authors like Corman. Like we famously say it as CLRS, which are the initials of the four authors. कोरमैन तो सबने सुना होगा मेरे ख्याल से। Yeah, yeah, yeah. Okay, so one thing David is saying real-time implementation of graphs, right? So have we covered real-time implementation of graphs in our sessions? Yeah, I think like we have implemented the problem. I'm not sure what he means by the real-time implementation, but if he means that the problem solving, then yeah, we have covered some of the problems related to those topics. And if he mean like if he mean the real-time use of graphs, then I can say like every one of us is using the Google Maps, right? So it is a direct implementation of the graph because we always find the shortest path between any two destinations, and it is the straightforward graph algorithm to find that. So if you mean that thing, so this is the real-time application of graph. And if you are talking about the problem solving, I have covered that in my session. Okay, that's fine. That's fine. That's fine. So Amit is saying कि how can I cover if I'm a final year student, right? Final year तो आप मैं अपना पर्सनल बताता हूँ परसेप्शन आपको, ठीक है? पवन से भी हम इसके ऊपर राय लेंगे, ठीक है? तो अमित एक्चुअल में व्हाट हैपेंस, आपने एक बार तो उस बुक को पढ़ी रखा है जब आपने अपने कोर्स में पढ़ा हुआ है, राइट? थोड़ा सा तो आपने आइडिया लिया हुआ है, मतलब आप जब भले आपको जबरदस्ती पढ़ना पड़ा, ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा है उस बुक को। नाउ व्हाट हैपेंस इज आप फिगर आउट करो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनको थोड़ा फिगर आउट करो क्योंकि टॉपिक्स हमें पता करना जरूरी है। वी कैन नॉट डू एवरीथिंग एवरी डे, राइट? ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कंपनी मेरे कॉलेज में आ रही है तो उसके लिए मैं फिर से दोबारा से स्टार्ट करूं पढ़ना। तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू, हमें कौन से टॉपिक समझ में आते हैं, ठीक है, तो पहले हम उन पर एक्सपर्टीज करें, राइट? जैसे मेरे को एरेज अगर आता है, मेरे को सर्चिंग समझ में आती है, तो मैं उनको कंप्लीट करके एक साइड पे रख दूं कि हाँ मेरे को एरे सर्चिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाती है, मैं इंप्लीमेंट कर पाता हूँ, राइट? तो आप एक चेकलिस्ट बनाओ, उस चेकलिस्ट में टॉपिक्स आप मेंशन करो, उसके बाद कौन से टॉपिक्स पर आपकी एक्सपर्टीज है जिनको आपको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, फिर उन टॉपिक्स को जिनका रिवीजन नीडेड है उनको मार्क करो, ठीक है? और ऐसे टॉपिक्स जो आपने शायद अभी मतलब उन पर एक लेवल पर कॉन्फिडेंस नहीं आया है उनको मार्क करो, राइट? तो जो जिन पर आपकी एक्सपर्टीज हो चुकी है, जो आपको लगता है कि मैं कवर कर चुका हूं, उनको एक साइड पे रख सकते हो आप, ठीक है? जब भी कोई कंपनी आती है या कोई भी एग्जाम आपका आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उन टॉपिक्स जिनका रिवीजन नीडेड है अभी उनको छोड़ देते हैं, जिन पर हमारी कमांड नहीं है,
ठीक है, जिन पर रिवीजन नीडेड है, जो मेरे को समझ में आए थे लेकिन मैं भूल जाता हूँ, या मेरे को थोड़ा सा एक रिवीजन की जरूरत है, उनको मैं फिर से रिवाइज कर सकता हूँ, सो दैट अब मैं दो तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। एक जो मेरे को आती है वो, एक जो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था उनको कर सकता हूँ। और अभी के लिए मैं उन प्रॉब्लम्स को छोड़ देता हूँ जो मेरे को कॉन्फिडेंस है ही नहीं, उनको मैं नजरअंदाज करता हूँ, राइट। लेकिन धीमे धीमे, राइट, उन टॉपिक्स अभी मेरे को पता है जो मैं, जिन पर मेरी कमांड नहीं है, उनमें से एक एक टॉपिक उठा करके बैकएंड पर मैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूं, और इस लिस्ट को जो नॉट कॉन्फिडेंट वाले हैं उनको स्लाइड कॉन्फिडेंट वाले टॉपिक्स में मूव कर रहा हूं, धीरे धीरे ड्रैग करके। ठीक है, तो आप देखोगे कि विद टाइम आपकी लर्निंग इंप्रूव हो रही है, और आप खुद से बेटर, मतलब मैं ये चाहता हूं कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप किसी और से खुद को कंपेयर नहीं कर रहे हो, आपके दोस्त के प्लेसमेंट हो रहे हो उनसे कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप खुद को अपने आप से कंपेयर कर रहे हो कि कल जो मैं था क्या मैं आज उससे बेटर हूं या नहीं, राइट। इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस पाथ, डेफिनेटली यू विल सक्सीड, राइट। एक दिन में सक्सेस नहीं मिलती है, दैट्स फॉर श्योर। Yeah, very well said. Sir, any other applications of maps implementing graph? तो एक implementation जो मैं बता सकता हूँ, that is like topological sorting, right? जो graphs में आप लोगों ने देखा होगा, तो जिसमें हम dependency resolution जो order है वो maintain करते हैं, ठीक है, वो मेरे को बेस्ट पार्ट लगता है ग्राफ्स, मतलब विद द हेल्प ऑफ दैट थिंग। ठीक है, दूसरे बात डेडलॉक रेजोल्यूशंस में जो साइकिल्स रिमूव आइडेंटिफाई करना, तो डेडलॉक्स जो रिसोर्स एलोकेशन आप करते हो, चाहे ओएस जो आपका रिसोर्स एलोकेशन करता है, तो कहीं वो इस तरीके से तो नहीं हो रहा है, तो वो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनाता है, और वो ये देखता है कि साइकिल तो नहीं बन रही ग्राफ में रिसोर्स एलोकेशन के टाइम पर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां मतलब मैप्स तो यस पवन। Yeah, Amit also in the chat said that Facebook is also using graph. Like we have friends and friends of friends and friends of friends of friends. So these hierarchical systems can also be implemented using the graphs. So yeah, so these are like there are many other applications also. So these are the main applications. Yeah. I think any other query? Okay. I start studying but get frustrated when I'm not able to solve problems. Yes, definitely true, man. It's not with you, it's with everyone, right? When we are not able to solve any problem, it's not about coding problem also. आप अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो कि आप कोई छोटी सी प्रॉब्लम है जो उसको आप घर पे कोई चीज खराब हो गया उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, राइट, वो नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करते हो आप एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हो, राइट, फिर आप जाते हो एक्सपर्ट्स के पास, ठीक है, लेकिन आप ट्राई करते हो। तो फ्रस्ट्रेशन नहीं करना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, फिर हमें सही गाइडलाइन ढूंढनी है, ठीक है। Exactly. ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन, राइट, यू हैव टू फिगर आउट, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो आपकी हेल्प जरूर करेगा, राइट, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में है, चाहे वो आपके मेंटोर्स हैं, चाहे वो आपके टीचर्स हैं, आपको सही रिसोर्स पता करना जरूरी है। तो आई होप फ्रस्ट्रेशन से तो कुछ नहीं होने वाला, फ्रस्ट्रेशन से तो आप और अपनी प्रॉब्लम बढ़ाओगे, सो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। Yes, this phase हर किसी के प्रोसेस में ये फेज आता है फ्रस्ट्रेशन वाला, but the thing is we have to deal with that. We shouldn't get frustrated. Day to day goals बनाने उस टाइम जब when you feel frustrated, just make the day to day goal, because like if you make a bigger goal like I have to become a candidate master or a master, if you keep that goal in your mind, then you will get frustrated easily because you cannot see the progress. But if you make the day to day goal, the goals like I have to solve 5 problems today, these kind of goals I think are best. So if you make the goals every day and achieve those goals every day, then I think it will help you mentally. Yeah, so I think this is the thing. This a best thing has been like, मेरे को बहुत पसंद है पवन, the suggestion that Pawan has given is, प्रॉब्लम इज कि हमने अगर ड्रीम मेरा बहुत बड़ा है, राइट, तो मेरे को लगेगा कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन अगर छोटे छोटे ड्रीम्स बनाए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाए, छोटे छोटे गोल सेट किए, राइट, कि जैसे मेरे को 5 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आज 5 हो गए, तो कल मैं 6 का गोल बनाता हूँ, राइट, कि 6 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो छोटे छोटे गोल्स जब अचीव होते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैं इनको अचीव कर पा रहा हूँ, एंड दे विल डेफिनेटली लीड यू टू द ग्रेटर पाथ, राइट। वो जो बड़ा ड्रीम आपने देखा है, डेफिनेटली आप मूव हो रहे हो और अभी क्रॉल कर रहे हो, फिर धीरे धीरे भागना शुरू करोगे अपने ड्रीम की तरफ। Exactly. I agree with you, Pawan. Agree with you. That's really the best way to not getting frustrated, right? So, how to know which graph application can apply on the problem? What our approach for that?
So Yeah, I think, yes, I think the practice, like, you, I think Surikant was asking, right? Suryakant is there, right? Suryakant. Let Yeah, me so I think highlight this. this is the thing. It will come with the practice. The more problem you solve, the more you'll like you will make the intuition about the problem, and the intuition will come with the practice. Like, initially, I was also not able to understand what kind of problem is that. But when you solve 50 problems, 60 problems, 100 problems on the graph, then you will make an intuition about the problem. So after you practice hard, after you solve these many number of problems, then the phase will come when you read the problem, you know what the problem setter was asking. Like, you will read the mindset of the problem setter, what was in the mind of the problem setter while creating this problem, uh, or or the problem statement. So I think this will really help. Like, the practice is the main thing here. Any other input from Piyush? Agree, Pawan. Because my answer was to Surikant was also this practice will help you on this. Because what happens is generally ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स का वेरिएशन जितना हमने देखा हुआ है, राइट, तो फिर हम उतना ये उस तरीके से है कि आपके पास स्किल्स हैं, राइट, इस आपके टूल किट में कितने टूल्स हैं, ठीक है, तो जितनी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो उतनी टूल्स आप अपने टूल किट में ऐड करते जा रहे हो, और फिर जब नई प्रॉब्लम आती है ना तो आपके पास वो टूल होता है उस प्रॉब्लम को उस या उस किस भी चीज को इम्प्लीमेंट करने का, राइट। तो अगर अगर टूल किट आपके पास छोटी है, शुरू में आपके दो अप्रोच है सॉल्व करने का, तो हो सकता है आप सारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि हाँ ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करने का है, या इस तरीके की प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व हो जाती है, तो फिर आपकी टूल किट का साइज बड़ा होता चला जाएगा, फिर आप देखोगे कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो, बहुत कम चीजें हैं जो आपसे मिस हो रही हैं, ठीक है। Right. So Deepak has one question. Like this would be our last question. After that, I will be ending up this session, right? So Deepak के question का हम आंसर करने की कोशिश. I can't able to come up with the optimized solutions, right? How to improve this skill? Pawan, any? Yeah. So I am understanding Deepak's concern very well, because this is also the problem with everyone else. We are able to understand the problem. We are able to come up with a solution, like the brute force solution. For example, the brute force solution. If we are getting to the brute force solution, it means that we understand the problem. मतलब हमें problem की approach समझ में आ रही है, हम उसको मतलब solve करना चाह रहे हैं, और हमारी algorithm भी बन गई. But the thing is, हमारे दिमाग में अगर n square approach आ रही है, but the question demands n log n or O of n type of approach. So this is the thing. So here, I'll tell you one thing. So here, like, this is the part where the learning of algorithms came into play. Like, brute force solution हम लोग generally बना लेते हैं अपनी understanding से, like अपने skills, अपनी logical thinking वाला part जो है, उससे we come up with the solution. But there is a limit to the skills, right? So here there are some standard algorithms which, like, learning or practice वाला जो part है, वो इसी phase पे आता है, when you are able to you have very good logical skills and other skills, but you require to practice and learn the algorithms which are there, right? So this thing, I will say that learn more and more algorithms which are there on each and every topic, and once you know the topics, like the algorithm, the standard algorithms, then I'll give you, like, for sure you will be able to optimize the solution. This is a guarantee from me. Like, learn the algorithms which are there on each topic, and then try to solve the problem, and you will definitely come up with the optimized solution. Okay, so thanks, Pawan. मतलब मेरे को लगा कि this could be the best answer, right, for Deepak. सो व्हाट वी लेट मी समराइज आवर सेशन, राइट। तो हमने जो डिस्कस किया है चीजें आज, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर सबसे पहले आपको पवन ने बताया कि ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इंपॉर्टेंट किस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना चाहते हो तो आपको ग्राफ्स का नॉलेज या इम्प्लीमेंटेशन आना जरूरी है। दैट इज लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड थिंग दैट वी डिस्कस्ड इज कि क्या रिसोर्सेज है, कैसे स्टार्ट करना है, राइट, कैसे हमें प्लान करना है। तो वी नीड टू फिगर आउट अ वे सो दैट वी कैन हैव इजी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, राइट, और मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स। स्टेप बाय स्टेप्स जो उसका सोल्यूशन एक हमने आपको बताया कि यू कैन गो थ्रू आवर सेशंस which is on Geeks for Geeks practice channel. We have a playlist with the name Connecting Edges, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप ग्राफ में
से आपको डर लगता है, तो ग्राफ्स की प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व नहीं हो रही हैं अभी, तो आई कैन एश्योर यू आफ्टर अटेंडिंग दोज 9 सेशंस यू विल से दैट यस I have attained a certain amount of confidence level and now I'm able to implement those problems जो मैं पहले नहीं कर पा रहा था. ठीक है. उसके बाद देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज जो स्टैंडर्ड बुक्स आपको बताया पवन ने, उन स्टैंडर्ड बुक्स को हम फॉलो करें और प्रॉब्लम सॉल्व करें, और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, चाहे वो एमएसटी का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो डीएफएस का कॉन्सेप्ट है, चाहे वो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट है, हम फिगर आउट करें, प्रॉब्लम्स को पहचाने कि किस टाइप की प्रॉब्लम ये हो सकती है और उनको इंप्लीमेंट कर, अगर वो सही तरीका नहीं है तब भी आप उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश जरूर करें, जिससे आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि इस टाइप की प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व नहीं होती. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ लर्निंग, राइट. अगर आपको लगता है कि हाँ ये सॉल्व होनी चाहिए, उससे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. नहीं अगर आपको सोल्यूशन मिल रहे हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज छोटे छोटे गोल्स आप बनाइए. ठीक है, आज एक प्रॉब्लम से स्टार्ट कीजिए, फिर 2 प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू रीच द एक्सपर्ट लेवल वन डे, राइट. अब ये कोई किसी के लिए 3 दिन हो सकता है, किसी के लिए 3 हफ्ते हो सकता है, किसी के लिए 3 महीने हो सकता है. ठीक है, इट डिपेंड्स, राइट, हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग, right. So this was a summary for session today, and Pawan, thanks a lot for creating such a wonderful playlist जो आपने हमें दिया है GFG practice channel पर, right. Connecting edges has been loved by a lot of people. We have got a very good feedbacks from the people, right. They have said कि सर ये बहुत अच्छी रिसोर्स है, और वही चीज हम आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं. You should also go through that those sessions, those series once, और अपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसी लगी हमारी सीरीज, और क्या ये एक डिफरेंट वे है ग्राफ सीखने का. मतलब आपको नेट ऑनलाइन पे जितने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, क्या उससे बेटर रिसोर्सेज है या नहीं. अगर आपको लगता है कुछ इंप्रूव किया जा सकता है, तो वो फीडबैक्स भी जरूर दीजिएगा, सो दैट वी विल बी इंप्रूविंग दोस प्लेलिस्ट. ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया 9 सेशंस तो 9 सेशंस, हम आपके रिकमेंडेशन पर, आपके सजेशंस पर उस सीरीज को इंप्रूव करेंगे और अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट, राइट, इन फील्ड ऑफ एनीथिंग, राइट. ये ग्राफ की बात करते हैं, बाकी डीपी की बात करेंगे, गेम थ्योरी की आपसे बात करेंगे. ठीक है, हमने वो सारे टॉपिक्स पर काम करने की कोशिश की है. वी हैव फिगर्ड आउट द डिफिकल्ट टॉपिक्स इन द टर्म्स ऑफ इन कॉन्टेक्स्ट टू कंटेंट प्रोग्रामिंग, और हमने उन सब पर काम किया, आपके लिए आसान बनाने की पूरी कोशिश की है. और आप चेक करना चाहते हैं तो एक बार GFG गीक्स फॉर गीक्स प्रैक्टिस चैनल चेकआउट करके देखिए. गेम थ्योरी पर लाइव क्लासेस अभी चल रही हैं. ठीक है, उसके बाद हमारा जो है एडवांस डेटा स्ट्रक्चर पर हम लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, राइट. बाइनरी सर्च पर हमारी क्लासेस चल रही हैं. तो ये वो चीजें हैं जो रिसोर्सेज आपको इजीली अवेलेबल नहीं होंगी कहीं पर. आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप प्रोग्रामिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो गीक्स और गीक्स प्रैक्टिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक बार आप देखिए वहां पर कितना कंटेंट हम लोग आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड यू विल रियली लव इट. आई कैन एश्योर यू दिस. वहां तक जाना आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, राइट. चलिए, थैंक यू पवन. We are good to close this session, right? And if you have any queries, you can put them in comments. We'll try to resolve your queries here only. Thank you guys. Thank you very much. Thank you, Piyush.